Good morning, students. Ninth standard. We already studied this chapter, which name is environmental management. In this chapter, we already seen about weather, climate, and meteorology. I hope that you understand it very well. Now, we are going to consider our next point: solid waste management, need of the hour. Solid waste management. See, in our surrounding, in your home, at your home, there are two types of garbage. Wet garbage is there, dry garbage is there. Okay, solid garbage is also there. We need to manage this kind of garbage. We need to manage this type of waste. And how could we are going to manage these all things? If we are unable to manage this kind of things, then it's ultimately leads to a pollution. That's why we need to what manage these all things together. Now this is need of the hour. Why the heading is given like that? It's a need of the hour because it's need of all individual of the world nowadays, because it's lead to pollution, and pollution is the global problem. Pollution is the global problem. Waste management, solid waste management is the global problem. We need to solve this problem with the help of some efforts which is worldwide taken by all. In this chapter, we are going to consider how we are going to manage these all things together. First of all, we see what is meant by pollution. Pollution to है, लेकिन what is meant by pollution? Pollution means pollutant, pollute the things. Pollutant means water है. वाटर में अगर कुछ गिर गया, कंटामिनेटेड हो गया, तो क्या हो गया? पोल्यूटेड हो गया. तो वाटर पोल्यूटेड हो जाता है तो क्या हो जाता है? पोल्यूशन. देयर आर how many types of pollution? Water pollution, air pollution, noise pollution, soil pollution. So many kinds of pollutions are there. And what is the definition of pollution? Contaminated of the things, particular thing. Contamination of air, contamination of soil, contamination of water with the bad things is called pollution. In which different ways do the surrounding get polluted? Surrounding get polluted do the how? If we throw some garbage near the water source, then what would be happen? That garbage entered in that water and that water is become polluted. If we threw industrial water directly in the source of water, resources of our water, that what would be happen? It's again become polluted. Means that water is we are going to unable to drink. हम वो पानी पी नहीं सकते because it's become polluted. So that's why it's a global problem. It's not a single problem which is arising with individual, which is arise with individual. We won't do that things which are controlled, uncontrol this pollution. Okay, so we see here, try this. Again, solid waste diagram is given here. Observe the garbage is collected in the dustbin of your classroom and make a list of various materials in it. Discuss with the teacher how this material can be properly disposable of. Can we do the same with the garbage generated in the house? Think about it. अगर आपके टीचर को बोलो कि आपके स्कूल के डस्टबिन में जो जो आपको मिला है वो सॉर्ट आउट कर ले और फिर बताए कि इसमें सॉलिड वेस्ट क्या है और ये रिसाइकल हो सकता है. Listen, if you see there is papers, okay, sharpened pencils, particles, okay, as well as some glass particles is given in this diagram. Tin bottles are also there, plastic bottles are also there. So these all things may again recycle it. हम इसका रिसाइकल करके फिर से उसका यूज कर सकते हैं. Nowadays this polythene is become a global problem. We in our city also, in our India also, we boycott plastic. Plastic को हमने boycott कर दिया है. So it's ultimate decisions taken by our government to boycott plastic is good. How we boycott the plastic? See, polythene carry bag we can never carry in a road to market for purchasing anything. So if you observe that in all kind of stores, there is the
a cloth bag is given to us or paper bag is given. Why? Why? To avoid the use of polythene. This polythene bags is thrown by us, which is going to trap the water in water resources, in nalas, pond. That's why it would be happen to a, a flood. It's going to cause flood in various areas. That's why we need to avoid this use. हम लोग क्या करते हैं, थ्रो कर देते हैं पॉलीथीन बैग, कैरी बैग। 2005 में पता है ना, बहुत बड़ा फ्लड आया था। वो कैसे आया था, उसका जब रिसर्च किया गया तो ये समझ में आया कि जब पानी में लोग नाले में, इसमें नदी में फेंक देते हो बैग्स, ऐसे ही रोड में फेंक देते हैं, वो बैग कहाँ जाते हैं, फिर पानी में चले जाते हैं। और पानी में वो तो 500-400 साल डिजनरेट करने के लिए ले लेते हैं, और वो जाके पानी में फंस जाते हैं। तो पानी वहाँ से आगे नहीं जा सकता है, जाम हो जाता है। पानी जाम हो गया तो इट्स अल्टीमेटली लीड्स टू फ्लड्स। सो वी नेवर नीड टू यूज दिस पॉलीथीन। पॉलीथीन ठीक है, आप पॉलीथीन कुछ भी यूज मत करो, कुछ नहीं करो, अच्छी बात है कि पॉलीथीन यूज नहीं करना है, बट अवॉइडिंग पॉलीथीन यूज इज द मेन what we say is remedy for that controlling this kind of disasters. No, I think so. If we never use polythene, it's okay. Carry bag we never use. Instead of carry bag we use what? Polythene bag we use cloth bags. It's okay, but we boycott the plastic is good decision. See, in our home, if you see in your kitchen, in your bathroom, in your bedroom, so many kinds of plastic articles are there. So I think so the remedy is, what do you think the remedy for using plastic? It's necessary, it's never degenerate, it's decomposed, that's why we need it. Oh, it's a long lasting टू यूज़, है ना, बहुत दिन तक चलता है ये। तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? द पॉलीथीन, द कैरी बैग, द प्लास्टिक विच इज इट एट योर होम is presently at your home only. If you are not going to use it, that is also it's take some space anywhere on the earth, है ना। अगर आपके घर में प्लास्टिक है, आप उसका यूज़ नहीं करोगे, लेकिन है ना वो प्लास्टिक, बाहर डालोगे, बाहर रखोगे तो भी जगह ले ही लेने वाला है वो, तो जगह लेने वाला है, लेकिन वो डिकम्पोज नहीं होने वाला है। तो इससे अच्छा है, इन माई ओपिनियन, इफ़ वी डू रिसाइकल तो करते ही रिसाइकल। हम जो भी कूड़ा कचरा फेंकते हैं, वो तो उठाने वाले आते हैं, उसमें से प्लास्टिक ले लेते हैं, साफ करते हैं, फिर रिसाइकल करके उसका फिर से जो चाहिए वो आर्टिकल बना लेते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जितना भी प्लास्टिक है, कैरी बैग है, जो भी है, उसको रिसाइकल करो, लेकिन उसका दूसरा उत्पाद मत लो। जितना अभी 80%, 10%, 50% जितना भी प्लास्टिक है, उसी का ही रीयूज करो। उसके अलावा आर्टिफिशियल प्लास्टिक फिर से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ वी कंट्रोल इट तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। हम फेंकेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, जो अपने पास प्लास्टिक पड़ा है उसका ही रीयूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कैरी बैग भी नहीं बनाएंगे उससे तो ये अल्टीमेट यूज़ हो जाएगा। और बस इसका एक प्लास्टिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही है कि जो है उसका रीयूज़ करो और दूसरा प्रोड्यूस मत करो, दूसरा प्रोडक्शन मत लो। What is the main difference between, we see the two picture along 9.2 and A and B. यहाँ पे 9.3 एरिया विद गार्बेज वर्सेस क्लीन एरिया इट्स गिवन ईयर। तो आपको क्लीन एरिया तो सबको पसंद है, क्लीन तो सबको पसंद है, लेकिन हम रखते हैं क्या क्लीन? हाँ, तो यहाँ पे दूसरा एरिया है जिसमें लॉट्स ऑफ गार्बेज इज, लॉट्स ऑफ लिटर इज देयर। तो कैसे ये लोगों ने ऐसे वैसे फेंक दिया है, वहाँ पे प्लास्टिक भी है, कूड़ा कचरा भी है, सब कुछ है। तो हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दिस? इट्स आवर बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी नीड टू क्लीन आवर होम एज वेल एज आवर सराउंडिंग। घर तो सब अच्छा रखते हैं ना। और मैंने लास्ट ईयर स्ट्रीट प्ले भी किया था ना, अपना घर तो सपना है, बाहर फिर अपना है, उसमें एक स्लोगन था ना। तो उसकी तरह घर तो घर अपना सपना ही है ना।
लेकिन बाहर भी तो अपना है। हम वहाँ पे देखो, यहाँ पे आज आप अच्छे साफ सुथरे घर में रहते हो, लेकिन कूड़े कचरे वाले रास्ते से गुजरते हो तो आपको भी इन्फेक्शन होने ही वाला है ना। और गंदगी भी है उससे, और आपको वो देखने के बाद आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, आपका मूड भी खराब हो जाएगा, ऐसी कितनी गंदगी है करके। तो जैसे आप घर अपना साफ सुथरा रखते हैं, वैसे ही आपको बाहर भी साफ सुथरा ही रखना चाहिए। Many waste materials are generated through the various daily human activities. This materials, how it's generated, it's due to our daily activities. We use something, and after it's unwanted thing, we throw it. After use, what is unwanted we throw out. This called solid waste. ये है solid waste. If these waste materials are properly disposed of, we can be a valuable source of energy. If we possibly dispose it in a good manner, in a scientific manner, it's lead to a good energy valuable source for us. Currently, the solid waste is a serious worldwide problem, and it is a cause both water and soil pollution. See, it's a very dangerous problem. It's worldwide. It's lead to a pollution of soil as well as water pollution. So solid waste is also serious problem from the point of view of economic growth. ये solid waste भी इतना economic growth के लिए भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। Environmental degradation and the health. It has posed a serious threat to the nature and human habitat because of the air, water and soil pollution it causes. हमारे हैबिटेट के लिए, मीन जहाँ भी रहते हैं हम एनिमल्स, उनके हैबिटेट के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, बिकॉज इट्स causes air pollution as well as soil pollution and water pollution, and without this air, water and soil will never survive. And if it could get polluted, then how could we lead, how could we do cope up with this all things? We need to solve this problem because it's lead to pollution, and pollution leads to problem to us. That's why we need to break down this problem from the root. Do you know solid waste generated in the main metro cities of the state is approximately as follows: Mumbai 5,000 tons, Pune 1,700 tons, and Nagpur 900 tons. See, this much is garbage is released from our houses in the metro cities. Like Mumbai is 5,000 tons, in Pune is 1,700 tons, and in Nagpur it's a 900 tons. So much we used. Then how could we manage these all things together? On 26th of July 2005, a serious flood calamity had arisen in Mumbai. It's already told you that this calamity is arising in Mumbai. Improper solid waste management was one of the main reason behind the calamity. ये जो प्रॉब्लम खड़ा हुआ था फ्लड का 2005 में, इससे सबसे मेन कॉज क्या था? इट्स अ improper solid management. Thus, we see that the accumulation of the solid waste can lead to a various calamities. जो ये कूड़ा कचरा solid waste जमा होता है, accumulate होता है, it's lead to a serious problem. That's why we need to boycott this plastic. Make a survey of the building of your area where you live. Categorize the garbage as degradable and non-degradable waste. Approximately how much the solid waste is generated in a week. Make a list of the factors responsible for it. आपकी बिल्डिंग में कचरा जो जमा होता है उसमें सॉलिड वेस्ट कितना है, एंड मीन्स बायोडिग्रेडेबल कितना है, जो वेस्ट डिकम्पोज हो सकता है, बायोडिग्रेड हो सकता है, वो वेस्ट कितना है, और मीन्स ऑर्गेनिक वेस्ट कितना है, और इनऑर्गेनिक वेस्ट कैसे कितना है, सॉलिड वेस्ट कितना है, इसका आप लिस्ट बनाओ. आजकल तो बहुत बड़े बिल्डिंग्स में एक वेस्ट मैनेजमेंट मशीन भी लगाया जाता है जिसमें सेंद्रीय खत बनाया जाता है, मैन्योर बनाया जाता है, ऑर्गेनिक मटेरियल से, नॉट इनऑर्गेनिक. तो ये भी आप कर सकते हो. व्हाट इज मीन्ड बाय सॉलिड वेस्ट, आपको अभी पता ही चला होगा व्हाट इज मीन्ड बाय सॉलिड वेस्ट. दिस इज फॉर योर होमवर्क. दिस what is meant by solid waste and what is the different things included in a solid waste. I think you should write these two questions as your homework, as well as you need to write these two questions also. What is meant by pollution, in which different way
टू आवर सराउंडिंग गेट पोल्यूटेड। ये आप लिख सकते हो और मुझे सेंड कर सकते हो। What are the different things included in solid waste? We make use of many materials and articles in your daily life. They are different kinds. Some of them are reusable, but others have to be discarded. However, if they are not properly disposed of, it's affect the environmental adversely. अगर हमने ये सॉलिड मैनेजमेंट किया नहीं तो इन्वायरमेंट को ये एडवर्स इफेक्ट देता है, मीन्स पॉल्यूशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा लाइफ डिस्टर्ब हो सकता है। Humans and animals both are get disturbed due to this solid waste. Now here we see, make a list and discuss. Read the following table carefully and what do you notice? See here table is given here. Classification, domestic waste and uska source kya hai. See here the classification is given. Some different sources are given here. Waste are given here. Domestic waste means जो हमारे घर में जो मिलता है वो. Waste food, paper, plastic paper, plastic bags, vegetable waste, fruits, skins, glass and sheets, metal articles, etc. It is from our house only. इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल्स, पिगमेंट्स, लेड्स, एश, मेटल्स, ये है केमिकल इंडस्ट्रीज से मिलने वाले वेस्ट। देन हजार्डस वेस्ट, ये हजार्डस मीन्स ये बहुत ही डेंजर गंभीर होते हैं हमारे लिए। केमिकल जनरेटेड इन वेरियस इंडस्ट्रीज, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, एक्सप्लोजिव्स, इन्फेक्शियस मटेरियल एक्सेट्रा। ये रेडियो एक्टिव मटेरियल में जहाँ से रेडिएशन हो सकता है ऐसे मटेरियल्स, एक्सप्लोजिव्स जो जल के बर्न होता है, ब्लास्ट कर सकते हैं ऐसे, और इन्फेक्शियस जिससे इन्फेक्शन हो सकता है ऐसे मटेरियल। फार्म एंड गार्डन वेस्ट, फार्म में और गार्डन में जो वेस्ट होता है। लीव्स, फ्लावर, ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, क्रॉप, रेसिड्यू लाइक स्ट्रॉ, एनिमल्स यूरिन एंड डंग्स, पेस्टिसाइड्स, रिमेन ऑफ वेरियस केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ये भी बहुत डेंजरस होता है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, नॉन फंक्शनल टीवी सेट, सेल फोन्स, म्यूजिक सिस्टम, कंप्यूटर्स एंड पेयर ऑफ अदर पार्ट्स, ये है इलेक्ट्रिकल वेस्ट। ये जो हमारे 15 ईयर से हमारे घर में हम देख रहे हैं, टीवी वेस्ट, सेल फोन, पहले तो ये नहीं थे, बाद में ये इलेक्ट्रॉनिकल वेस्ट आ गए। देन बायोमेडिकल वेस्ट, बैंडेज, ड्रेसिंग, ग्लोव्स, नीडल्स, सलाइन बॉटल, मेडिसिन बॉटल, टेस्ट ट्यूब, बॉडी पार्ट्स, ब्लड etc. from the clinic, hospital, blood bank and laboratories. These are the biomedical waste. Biomedical waste के लिए अलग सा ही प्रोविजन किया है, ये कचरे का विघटन करने के लिए, इसको इस मैनेजमेंट करने के लिए अलग ही नगर पालिका की गाड़ी आती है, बायोमेडिकल वेस्ट लेके जाती है। देन अर्बन वेस्ट, वेस्ट जनरेटेड थ्रू हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज एंड लार्ज कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, carry bags, glass, metal piece and the road, thread, rubber, proper cans from the shops, vegetables and meat, mine, atomic research, market, construction waste etc. ये कहाँ के हो गए? अर्बन वेस्ट। हम हमारे एरिया में हमेशा देखते हो ना, do observation, all kind of observation in your area. See, when any application based question is come to you, then you have to write in your own words. That's why the observation is the most need. It's important way to observe and write down in your own words. Then radioactive sources, waste, radioactive material like strontium-10, cerium-141, barium-140 and heavy water generated from the atomic energy plants, uranium mines, atomic research center, nuclear weapons testing sites etc. Then mining waste, जो खान होती है ना वहाँ के वेस्ट, remains of heavy metals like lead, arsenic, cadmium are it's from the mines. माइन में जो रिमेन रहते हैं ये भी बहुत बड़े वेस्ट होते हैं. So this kind of waste is given here, and although they are must be managed by us. अगर हम इसे अच्छे से मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो इट्स लीड टू अ सीरियस प्रॉब्लम टू अस, serious problem of pollution, air pollution, water pollution and soil pollution. In all these three problems, it's make our life hard. We never
get to survive anymore due to this all problem. That's why we need to classify our waste at your home as well as in the surrounding, and keep your surrounding clean as much as you can, and aware people who don't throw garbage in your surrounding, as well as classify their garbage into wet garbage, into solid garbage, into uh, organic garbage जो है ना, तो आपको ये करना पड़ेगा। इसके अवेयरनेस की वजह से ही लोग अलग अलग कचरा रखेंगे, तो क्लासिफाई करने के लिए और उनको मैनेजमेंट करने के लिए इजी होगा। तो आपको ये समझ में आया। तो आज तक हमने ये ले लिया है, ये टेबल ले लिया है, पूरा क्लासिफिकेशन एंड सोर्स। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर विल यू कंटिन्यू again this chapter. Got it? For today it's okay up to this, and whatever homework is given, please do it and send to me. For today, thank you.